हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल मितुज क्रिएटिविटी कॉर्नर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके वर्क स्पेस को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। इसके लिए मैं बना रही हूँ डेस्क ऑर्गेनाइजर। यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ एक स्पेयर कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है। अब मैंने इस पे यहाँ मार्क लगा लिए है पेंसिल की हेल्प से। अब इसे सीजर से कट कर लूँगी। मैं पेन होल्डर भी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक चिप्स के बोतल को ऐसे कट कर लिया है हाफ में। अब मैं स्पेयर क्लॉथ्स यूज कर रही हूँ, जो काफ़ी छोटा हो गया है मेरी बेटी को, तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। इनसाइड में इसे स्टिक करूँगी ग्लू की हेल्प से, और कट कर लिया है अकॉर्डिंग टू दैट कार्डबोर्ड बॉक्स शेप। यू कैन सी हियर। लाइक दिस। अब मैं यहाँ जूट फैब्रिक यूज कर रही हूँ। जूट फैब्रिक को भी कट कर लूँगी। उसके बाद आउटर साइड से इसे स्टिक कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ ग्लू। पेन होल्डर एंड ऑर्गेनाइजर बॉक्स दोनों रेडी हो चुका है स्टिक होकर। पेन होल्डर को मैं इनसाइड में स्टिक कर दे रही हूँ बॉक्स के। सी आई हैव वन लेस जो मैं यूज कर रही हूँ इसे थोड़ा डेकोरेट करने के लिए। नाउ आई एम मेकिंग फ्लावर फ्रॉम जूट फैब्रिक। इसके लिए मैंने एक पेपर को पहले कट कर लिया है फ्लावर की शेप में। सी लाइक दिस। जूट फैब्रिक पे इसे ट्रेस कर लूंगी। जूट फैब्रिक को थोड़ा हार्ड करने के लिए मैंने ग्लू में लिटिल बिट वाटर मिक्स किया है और इसे इस पे अप्लाई कर दे रही हूँ। फिर ड्राई होने के लिए रख दूंगी। ड्राई होने के बाद इसे फ्लावर बनाऊंगी। इट इज कम्प्लीटली ड्राई नाउ। नाउ आई एम मेकिंग फ्लावर। फ्लावर भी रेडी हो चुका है। स्टिक कर दे रही हूँ मैं यहाँ पे।
मैंने यहाँ एक कोट लिखा है, वॉक इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। इसे मैं सिल्वर कलर से पूरा पेंट कर दूंगी, देन ब्लैक कलर से इसे राइट करूंगी। इट्स रेडी नाउ। अब मैं स्टिक कर दे रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्लू। थैंक यू गाइस।